हे गाइस, वेलकम टू द फ्लाइंग पेपर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 तरीके जिनसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है ब्लॉगिंग। 2019 चल रहा है और काफी सारे मार्केटर्स एक ही सवाल पूछते हैं, इज ब्लॉगिंग डेड? वेल, इट माइट बी, but let's talk about statistics first. Around 456.1 million Tumblr blogs register हो चुके हैं और there are around 1 billion websites registered। हालांकि ये डेटा 2017 का है, but there might be even more. Okay, so blogging is competitive but still effective even now. So the question comes, is blogging dead? Well, मैं आपको बता दूं, blogging is not dead. हालांकि if you use the traditional methods to start a blog, then definitely blogging is dead for you. But if you change your perspective, if you change your strategy, if you change your angle of how you start a blog and how you present it in front of your audience, then definitely blogging is not dead for you. I am going to tell you few methods. इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है नीश बिल्डिंग, जो मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फोकस ऑन नीश बिल्डिंग, जिसका मतलब होता है आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो एंड यू आर स्टार्टिंग आउट, यू वांट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, you should start with a blog related to what you know actually, because only then you're going to build something out of it. If you're a mechanical engineer, you can start a blog on design, AutoCAD design, whatever you want to, and build your audience accordingly, so that if you provide services afterwards, अगर आप चाहते हैं कि आगे सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल डिजाइन के कुछ सर्विसेज हो या कुछ भी हो, आप आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके ऑडियंस भी डिजाइन की मतलब उसी फील्ड से रिलेटेड होगी। इफ यू वांट टू बी अ डॉग ट्रेनर, यू कैन स्टार्ट a blog based on dog training. So there are many ways to start, and if you specify your niche, you're definitely going to have a good success. ब्लॉगिंग का एक बेनिफिट होता है कि आप लो बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदनी है वेबसाइट के लिए। अगर आपको लोगो बनाना आता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। इफ़ यू डोंट नो, यू कैन स्टिल हायर अ फ्रीलांसर एंड गेट इट डन एट ए लो कॉस्ट। सो अराउंड $100 में आपका पूरा वेबसाइट रेडी हो जाता है, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू स्टार्ट इट राइट नाउ, बिकॉज कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आगे आपको बहुत टफ जाएगा। इसमें स्किल्स भी लाइक सिंपली राइटिंग और रिसर्चिंग की स्किल्स लगेगी, और आपको राइटिंग भी उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो। हर सर्च इंजन का अपना एक फंडा होता है, लाइक गूगल हैज सम regulations and you need to follow that. इसको SEO कहा जाता है, so you need to understand and learn those practices in order to write, but ये काफ़ी बेसिक है। अगर आप चीज़ें सीख जाएंगे तो blogging will be good opportunity for you. और एडिशनली इसके अलावा ब्लॉगिंग आपको हेल्प करता है आपका नेटवर्क बढ़ाने में। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर नेटवर्क in your industry, like I gave an example about mechanical engineer, it can help you to connect with other engineers or any students in your niche to actually get in touch, or even the companies, they can approach you for some projects. It's a good opportunity. If you have a blog, you can actually start monetizing it. If you don't know how to monetize, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप मेरे वेबसाइट में जाइए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जिसमें मैंने 8 वेज मेंशन किए हुए हैं ताकि आप मोनेटाइज कर सके अपने ब्लॉग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन की ओर, विच इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री। Freelancing is a way out to 9 to 5 jobs. Well, it might be. Some of you might do freelancing even with doing job, while some of you might give up your job to just to do freelancing. So there are multiple ways to get in there. Let's talk about India. India has over 15 million freelancers registered by 2018, and guess what? ये number 5 साल में डबल होते जाएगा, which is quite horrible, but यही होना है। So it is better to start right now. Freelancing is quite old, but you can start right now and get into the industry. However, even if you enter the market right now, you will find it quite competitive, but it is still better to start now rather than to start later. Freelancing, if you don't know, ये skill based jobs होते हैं, इसमें आपका past experience नहीं पूछा जाता। Let's say if you are a dentist and if you want to write
something. Like if you want to be a freelance writer, no one will question you what was your degree. However, it's a plus that you mention your degree as well, ताकि आपका expertise पता चले. मगर मगर आपने अगर कुछ किया भी ना हो, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम. I recommend beginners to join Fiverr, Upwork, and Freelancer.com. There are other websites as well, like People Per Hour, Truelancer, and many more. I have mentioned it in my website, so you can visit there and watch out. But I won't recommend Fiverr for freelance writers if you are quite experienced, because the price is pretty low. You won't earn enough. So I will make a video about all these things to help you get started with everything, like ब्लॉगिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, और अभी आगे चीज़ें मैं जो डिस्कस करूंगा आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू नो कि और कौन कौन से फ्रीलांसिंग जॉब्स है जो आप परस्यू कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, आप प्लीज़ उस पर विजिट कीजिए एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी फ्रीलांसिंग जॉब्स परस्यू कर सकते हो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड वे इन द लिस्ट, विच इज अफिलिएट मार्केटिंग. एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. मैंने अभी अभी इसको स्टार्ट किया, इट्स लाइक 2 months, yes 2 months, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आउट देयर टू बी एन अफिलिएट मार्केटर, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और अफिलिएट मार्केटर्स का यही काम होता है कि वो किसी कंपनी से प्रोडक्ट उठाए. आई मीन ही डजंट नीड टू हैव एन इन्वेंट्री, जस्ट प्रोडक्ट ले और रिकमेंड करे अपने कस्टमर्स को. सो एज इट इज मेंशन कि 81% ब्रांड्स यूज अफिलिएट मार्केटिंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. ये ऑनलाइन ब्रांड्स है अराउंड ग्लोब, जितने भी होंगे उनमें से 81%, ये रिकॉर्डेड डेटा है, they use affiliate marketers to promote their product. And guess what? They pay 10% of their revenue to these affiliate marketers, and these affiliate marketers generate 90% of profits to these companies. Amazing, isn't it? So that is what I'm saying. The market is actually booming, affiliate marketing, and you have ample amount of opportunities if you start right now. You can be called as an influencer or an affiliate marketer. Influencers are normally found in Instagram and all. Even they do this thing, affiliate marketing. What they do is, let's say if there's a lifestyle blogger, he takes a product and he reviews it, he puts a link on his Instagram or Facebook or YouTube, whatever, and if someone buys from that link, he gets commission. That is what affiliate marketing is. The perk of being an affiliate marketer is, like ब्लॉगिंग करते समय you should have a blog, right? Or even with a freelancer, freelancing is free, you don't need anything. But with affiliate marketing, you don't need a blog. You can start it out right now. You just need to join the platforms, programs, and be a part of it. If they approve you, you are eligible to promote any of their products. And if you have a good network, be it Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, whatever, you can start promoting products right away. And if anyone buys from your link, trust me, you're going to make your first income. So if you want to know top affiliate programs to join in 2019, I have mentioned a link in the description again. Please go and check it out. Affiliate marketing is a good source of passive income because it offers some recurring programs as well. Let's say if I buy something from an affiliate marketer, I mean, if I buy from their link, let's say if I buy a magazine and I renew it, then that affiliate marketer will be earning the recurring commissions as well. So it is a good opportunity for you to earn passive income. So let's move on to the fourth way on the list, which is e-commerce. Now, e-commerce is something I haven't tried personally. I'll be honest with you with this, but I will definitely step into it very soon if I find something lucrative in the industry. But the best thing about e-commerce is the market is actually going to boom in the upcoming 2 to 3 years. Now, let me tell you, it is predicted that Indian customers who will buy online will be 36% by 2020. And that is just 1/3 of the population. So just imagine the scalability of the market. Even if you start it next year, you still have a chance to roll. So e-commerce has an opportunity there. मगर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है. आई मीन, इफ यू स्टार्ट टुडे,
you can sell your products, you can trend the market. Let's say if I launch a mobile phone, I'm not going to launch, but if I launch a mobile phone and if it is amazing, it might create thousands of sales. But if I get negative reviews, the next time if I launch a similar model, I might get zero sales. So that is what the e-commerce market is all about. कभी हाई तो कभी लो, जितना प्रॉफिट आप कमाओगे उतना ही लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। इतना वोलेटाइल ई कॉमर्स का मार्केट है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। मगर इसमें कंपटीशन भी बहुत है, बिकॉज काफी सारे लोग वही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है। इसमें आप प्रॉफिट कमा तो सकते हो, बट आपको अच्छे रिव्यूज चाहिए होंगे, उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड। सो द थिंग इज start only if you are something unique, ताकि लोग उसे खरीद पाए, एंड people should gather good reviews, good amount of reviews, because only then आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा। अब अनलाइक अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर अगर आप इन्वेंट्री भी रख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट आउट, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Amazon, Etsy या Flipkart इससे स्टार्ट कीजिए। द रीजन बीइंग दिस इज बिकॉज उनका मार्केट प्लेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, क्राउड ऑलरेडी हाई है, अफिलिएट मार्केटर्स आपके प्रोडक्ट रिकमेंड करवाएंगे, तो प्रॉफिट स्केलेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर खोलें। आप वो भी कर सकते हैं इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, मगर आप अगर एक्सपीरियंस ना हो, बिगिनर हो, तो प्लीज आप इन्हीं मार्केट प्लेसेस को यूज कीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ recommendation to start your business online is online courses. Online courses is highly recommended by top affiliate marketers like Ramesh Sethi, Melissa Griffin and many more. And what they are actually expecting is कि ये जो blogs मैंने जो blogging की बात की, is blogging dead or not, इन्हें जो सपोर्ट मिलेगा वो ऑनलाइन कोर्सेज का होगा, और ब्लॉगर्स जो होंगे हाईली बेनिफिटेड होंगे क्योंकि इनका ऑलरेडी ब्लॉग एस्टैब्लिश हो चुका है। ऑल दे नीड इज टू ड्राइव ट्रैफिक टू देयर ऑनलाइन कोर्सेज एंड दे नीड टू ट्रेन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस, विच इज हाउ दे कैन अर्न। सो ऑनलाइन इंडस्ट्री will surpass $240 billion by 2021, it is expected. Already आपको पता है सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, so it is a good opportunity to create online courses right now. अब इसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, that is a question. But if you have an expertise in anything, let's say you are expert in creating drones, you can create a course about it and sell it to people. Teach people about it and definitely people will join it if you have an expertise or authority about the subject. और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी चीज के रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो। I'll just show you an example. Udemy में एक कोर्स मैंने देखा, it was about dog food or something. People are actually teaching them and I just saw around 800 people joining the course. Let me just show you. Let's just see this. Dog training. Feed your dog a raw diet. Learn how to feed your dog the way nature intended and get a lean, fit and healthy dog. Makes dog training much easier. देखिए 823 students already enrolled into this and the price is 9,600 rupees. Discount period चल रहा है, so 770. So you know the scalability of it. आपकी जिस फील्ड में भी एक्सपर्टीज या इंटरेस्ट या ऑथोरिटी होगी, आप उसके रिलेटेड कोर्स स्टार्ट कीजिए एंड सिखाइए, डेफिनेटली पीपल विल जॉइन इट। आप कोर्सेस में क्या क्रिएट कर सकते हो, आप ट्यूटोरियल क्रिएट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं आगे करने वाला हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहली चीज होती है आपका नीश डिफाइन करना। जैसे मैंने ब्लॉगिंग में कहा कि आपको एक इंडस्ट्री डिफाइन करनी होगी, उसी के बाद आप आगे प्रमोट कर पाओगे। इसमें भी वही चीज होगा कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपको वो डिफाइन करना होगा। जैसे आप डेंटिस्ट हो एंड आप इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हो, या इंजीनियर हो डेंटिस्ट्री के बारे में, नहीं होगा पॉसिबल। सो यू नीड टू डिफाइन ए पर्टिकुलर नीश एंड देन प्रमोट योर कोर्स और क्रिएट योर कोर्स। प्लेटफॉर्म्स
एज यूजुअल यूडेमी अभी जो मैंने बताया, टीचेबल में भी आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो, थिंकिफिक, पोडिया, इनके रिव्यूज में आगे डालूंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे आप ऑनलाइन कोर्सेस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे मेरे ट्यूटोरियल्स और इंटरव्यूज के साथ बने रहने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज कमेंट्स में बताइए कि अगर आपने इनमें से कोई चीजें ट्राई आउट भी की हो, प्लीज मुझे नीचे बताइए ताकि हम इस पे कोई डिस्कशन क्रिएट कर सके। होप नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उसको विजिट करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। Thank you. Stay connected to my channel.